Hello and welcome back to our channel, The Exam Brew. So today we are discussing the concept of fundamental duties. Fundamental duties आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इजी टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस जनरली सिंपल और डायरेक्ट पूछे जाते हैं. इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू फ्यू क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं या जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए याद रखने हैं. Number first thing is fundamental duties was added by the 42nd Constitutional Amendment Act, which means the concept was not there in the original constitution. फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट स्टार्टिंग से था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड ओनली बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो आपका जो पहला क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, बाय विच अमेंडमेंट द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड. तो आपका बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. दिस वाज रेकमेंडेड बाय स्वरण सिंह कमेटी. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, which committee recommended the inclusion of fundamental duties? So it is Swaran Singh committee. The concept was taken from erstwhile USSR. In which part the fundamental duties are added? So it is added under part 4A. This is very very important, right? क्योंकि generally क्या होता है, fundamental rights के साथ आप fundamental duties को add करते हो, but the point is यहाँ पे it is added in the Part 4A, just after your Directive Principles of State Policy. This is applicable only to citizens. Like your fundamental rights, आपके जो fundamental rights हैं, they are applicable to citizens and non-citizens. आपके कुछ fundamental rights ऐसे हैं जो non-citizens के लिए भी applicable हैं. For example, right to equality, right to life. बहुत fundamental rights हैं जो which are available for both the citizens and the non-citizens. But यहाँ पे the fundamental duties they are only applicable to the citizens. तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है. They are non-justiciable, which means for the violation you can't approach the court. Approaching court is not available. There are total 11 fundamental duties. Originally they were 10. By the 42nd Constitutional Amendment there were 10 duties added, and with the 86th Constitutional Amendment the 11th duty was added. So 86th Constitutional Amendment किस चीज के लिए थी? This was for right to education. तो right to education में आपका एक fundamental right add हुआ था 21A में. There was a change in the Directive Principles of State Policy and a fundamental duty was added, जो कि आपका last में K में add हुई थी 51A K, right? Justice J.S. Verma committee was formulated to review the working of fundamental duty. So एक आपका ये question बन सकता है कि Justice J.S. Verma committee जो थी उससे fundamental duties add हुई थी या it was for review? This was for review the working of fundamental duties. Quickly एक बार fundamental duties देख लेते हैं. To abide by the Constitution and respect its ideal and national flag and national anthem. To cherish and follow the noble ideas which inspired the national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, to defend the country and render national services when called upon to do so, to promote harmony, spirit of common brotherhood amongst all India, transcending religion, linguistic, regional, sectional diversities, and to renounce practice derogatory to the dignity of women. अब एक चीज समझो, जैसे आपका जो ये पॉइंट ई है, यूजुअली फ्रॉम दिस ड्यूटी आई हैव सीन क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फंडामेंटल ड्यूटी के ई पार्ट में क्या दे रखा है. क्वेश्चंस जनरली ऐसे नहीं आते, बट किसी किसी एग्जाम में आ सकते हैं कि जो आपका जैसे फर्स्ट ड्यूटी दे देंगे, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. ये कौन सी पार्ट पे दे रखा है? तो आपके एग्जाम आपके जो ऑप्शंस होंगे वो ए बी सी एंड डी, तो ए आपको टिक करना है उसमें. तो जनरली क्वेश्चंस ऐसे बहुत डिटेल में नहीं पूछे जाते, बट हाँ क्लैट के एग्जाम में या जुडिशरी के एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं. सो जस्ट कैन मेक सम फॉर्मूला टू रिमेंबर इट्स. फॉर एग्जांपल ऐसे आप इसमें यहाँ पे ए याद कर लो, अबाइड, यहाँ से सी से चेरिश याद कर लो, पी से प्रोटेक्ट याद कर लो, डी से डिफेंड द कंट्री, पी प्रमोट हार्मनी, राइट? तो मतलब कुछ भी आप एक वर्ड
उसमें से याद कर लो, उससे फिर आपको पूरा you should remember the whole sentence with one word. The R says to value and preserve the rich heritage and composite culture. G is to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. So जैसे आपका जो नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, या आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, उस चीज उनके थ्रू यू कैन एनफोर्स दिस ड्यूटी. जनरली जस्टिसिएबल नहीं होती आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज, बट हाँ, अगर कोई इसके रिलेटेड कोई एक्ट है तो उससे आप इसको एनफोर्स करा सकते हो. To develop the scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and abjure violence, to strive towards the excellence in all spheres of individual collective activity, so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement. This is very important. तो इससे भी एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. You can expect a question from this. So present day scenario में your D is very important, E is very important and K is very important. इन तीन फंडामेंटल ड्यूटीज को अच्छे से याद करें ना, इनमें से अभी क्वेश्चन आ सकता है इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. E और K में से तो जनरली क्वेश्चन मैंने देखा ही है, बट D से भी मुझे लगता है आपकी बारी क्वेश्चन आ सकता है. So just a quick revision. 42nd Constitutional Amendment Act से 10 duties were added. 86th Constitutional Amendment Act से 11th duty was added. The fundamental duties were added on the recommendation of Swaran Singh Committee. We have taken the concept from USSR. So originally there were 10 duties, one was added later on. These are non-justiciable. कोई related act है उसके थ्रू आप केस कर सकते हो, but as such the fundamental duties are non-justiciable. They are applicable only to citizens. Very important, duty to pay tax is not a fundamental duty. ये आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है. यस, ओरिजिनली ये बात थी कि ड्यूटी टू पे टैक्स शुड बी अ फंडामेंटल ड्यूटी, बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, राइट? So please do subscribe to our channel, and you can also follow us on Instagram. Daily we post one question on our Instagram channel and our YouTube channel. वो क्वेश्चन आपके एक क्विक रिवीजन के लिए रहता है, प्रीलिम्स के लिए. So please do subscribe to us and follow us on Instagram. Please share this channel with your fellow aspirants. We wish you all the very best for your exam preparation. Thank you so much.